हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम राम मंदिर का कुछ प्रश्न है जो कि हम यहाँ देखेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो हिंदी में हम करवा चुके हैं, इंग्लिश में देख लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा क्योंकि कहीं अगर आ गया तो बना सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। हियर इज माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अयोध्या इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देन द आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज which epic is primarily associated with Lord Rama and Ayodhya? The answer will be what? The answer will be Ramayana. I mean to say, हम तो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? रामायण। ठीक है, इंग्लिश में रामायणा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज what was the name of the structure demolished at the dispute site in 1992? The correct answer will be B is correct here, Babri Masjid. Question number 4. When was the foundation stone for the Lord Ram Mandir laid? The correct answer will be 2020. Also we can use here the Lord Rama. Lord. Here is written only Ram Mandir. We can say Lord Ram Mandir. Okay. The fifth question is what is the name of the trust behind the construction of the Ram Mandir? The correct answer will be B. Ram Janmabhoomi Tirth Kurukshetra Trust. Okay. Here is written Kshetra, not Kshetra. Okay. The sixth number question is which year did the Supreme Court of India give the verdict on the Ayodhya dispute? What will the correct answer? The correct answer will be 2019. Here is the B option is correct. What is the planned number of domes on the Ram Mandir? Domes mean to say Gumbad. What will be the correct answer? The answer is B, 5. Which architectural style of Ayodhya Ram Mandir? Then the correct answer will be Nagar Shaili. D is correct. Here is your ninth question. What is the name of the holy river flowing near Ayodhya? अयोध्या के जो नज़दीक में जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? तो सरयू। ठीक है, बहुत बोलनी है इंग्लिश में, थोड़ा हिंदी में बोलना जरूरी है। द what is the answer of question number 9? Here is Saryu Nadi. Okay, let's move on. 10th number question. Which Hindu festival is about Lord Rama's return to Ayodhya? Then the correct answer will be Diwali is the correct answer here. A is correct. 11th number question. We have to zoom out. Okay, who was the Prime Minister of the India during the Babri Masjid demolition in 1992? The correct answer will be Narasimha Rao. Okay, A is correct here. चलिए 12 पर चलते हैं. Let's move on to 12. Who sculpted the idol of Ram Lalla for the Ram Mandir? मतलब कि क्रिएट करना, ठीक है ना, जो जो उनका जो चेहरा वगैरह होता है, स्कल्पट मतलब क्या होता है? बनाना, उनका जो मूर्त है। कौन बनाए थे? तो बनाए थे आपका कौन? तो द करेक्ट आंसर विल बी अरुण योगीराज. Question number 13. Very, very important question. Question is that what is the estimate cost of Ayodhya Ram Mandir construction? The correct answer will be what? Here is the correct answer is 1800 crore.
Let's zoom out this. The question number is 14 is, what is the significance of the black stone? Mean to say Saligram Sila, okay? Used in the राम मंदिर फाउंडेशन। सिग्निफिकेंस कहने का मतलब कि क्या है महत्व, इसका इंपॉर्टेंस, महत्व, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्व बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, बिल्कुल बी इज करेक्ट, सिंबल ऑफ लॉर्ड विष्णु। द करेक्ट आंसर विल बी बी हियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 is, how many acres of land does the Ram Mandir complex encompass? The correct answer will be 70 acres. Okay. Here is my last question. यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, what is the auspicious duration for the Ayodhya Ram Mandir consecration ceremony? The correct answer will be 84 seconds. Okay. If you like this video,